Guys, in this video we will be talking about chapter number 26 government budget constraint. तो आइए समझते हैं the arithmetic of deficit and debt. तो हमारे पास एक इक्वेशन है which says deficit is equal to RBT minus 1 plus GT minus DT. तो आइए इसको समझते हैं, इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं. सपोज बेटा during a given time period T government expenditure is 20, you can take it $20 billion, और जो टैक्स कलेक्शन है दैट्स 18. तो डोंट यू थिंक गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट है 2 का, यानी गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है. मुसीबत तो तब हो जाती है जब गवर्नमेंट ने सपोज पिछले साल डेट लिया हुआ है 10 का और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. तो डोंट यू थिंक आपको उस डेट का इंटरेस्ट जाएगा 1. तो डोंट यू थिंक गवर्नमेंट का जो टोटल अब डेफिसिट है वो हो गया 2 + 1 दैट्स 3. और यही हम इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं. सो डेफिसिट इज इक्वल टू RBT माइनस 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप पुराने लोन पर देंगे जो पहले लिया हुआ है, GT गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, TT टैक्स कलेक्शन और इनकम एज दिस से. So BT minus 1 is the government debt at the end of year T minus 1 or at the beginning of the year T. R is the real interest rate, thus RBT minus 1 equals real interest rate payment on the government debt in year T. Obviously nominal और real में आपको फ़र्क पता ही है. GT is government spending during year T. TT is taxes minus transfer during year T, basically net income. In words, the budget deficit equals spending including interest payment on the debt minus taxes net of transfers. तो इस इक्वेशन के दो फीचर्स हैं. पहला, वी मेजर इंटरेस्ट पेमेंट एज रियल नॉट नॉमिनल. ऑफिशियल मेजर ऑफ द डेफिसिट हाउएवर यूज नॉमिनल विच कैन बी मिसलीडिंग ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन. द करेक्ट मेजर ऑफ द डेफिसिट इज समटाइम्स कॉल्ड द इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेफिसिट. G does not include transfer payment, it simply means spending on goods and services. Government budget constraint. It simply states that the change in government debt during year T is equal to deficit. So BT minus 1 is equal to deficit. इसका मैं आपको एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ. तो अब इस साल आपको 3 का डेफिसिट है और ऑब्वियसली इतना लोन लेना पड़ेगा आपको. तो अगर आप 3 का लोन लेते हो तो अब आपका जो टोटल डेट है, जो पहले 10 था, 3 का आपने और लोन लिया तो वो हो गया 30. So that's precisely what we are trying to say here. So government budget constraint. So it says, it simply states that the change in government debt during year T is equal to deficit. BT minus 1 is equal to deficit. If the government runs a deficit, government debt increases. If it runs a surplus, obviously government debt decreases. Now using equation 1, we can have the following. So BT minus 1 is equal to RBT minus 1 plus GT minus ET, where deficit को हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लिया है. So it is often convenient to decompose the deficit in two terms: interest payment on the debt, that is RBT minus 1, GT minus TT, which is also called primary deficit. अब प्राइमरी डेफिसिट टर्म ना आप जब छोटे थे 12th क्लास में तो आप पढ़ते थे एज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर वो इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़कर जो डेफिसिट है वही लिया गया है. So now we have the following. So BT minus 1 is change in the debt, RBT minus 1 is the interest payment, mind it the real interest, GT minus TT is your primary deficit. Moving BT minus 1 to the right, basically इसको BT के टर्म्स में अगर खोलेंगे तो we get this. Current versus future taxes. Suppose until year 1 government has balanced budget, now it decreases taxes by 1 for first year. Thus debt at the end of the year 1 is 1. क्योंकि जितना आप टैक्स कम करेंगे उतना आपका डेफिसिट आ जाएगा, अदर थिंग्स कीपिंग कांस्टेंट, और उतने का आपका फिर वो डेफिसिट माना जाएगा और उतने का आपको डेट लेना पड़ेगा. फुल रीपेमेंट इन ईयर 2. सपोज द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू फुली रीपे द डेट ड्यूरिंग ईयर 2. तो इसको अब BT यहाँ पे B2 हो जाएगा, 1 प्लस R प्रीवियस ईयर 1 हो जाएगा, प्लस G2 माइनस T2. तो अगर आप डेट फुली रीपे कर देते हो, इफ़ डेट इज़ फुली रीपे ड्यूरिंग ईयर 2, तो B2 0 हो जाएगा, रिप्लेसिंग B1 बाय 1 क्योंकि आपका डेट 1 था, एंड B2 है 0. हमारे पास बचेगा इसको सॉल्व करके T2 माइनस G2 इज इक्वल टू 1 प्लस R. यानी गवर्नमेंट को बजट सरप्लस रखना पड़ेगा इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डेट प्लस उसका इंटरेस्ट. सपोज 10% इंटरेस्ट था उस एक के डेट पर, तो अब आपको वापस क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दैट मीन्स 1.1. तो गवर्नमेंट को अपना
जो सरप्लस है, प्राइमरी डेफिसिट नहीं, प्राइमरी सरप्लस रखना पड़ेगा इक्वल टू 1.1 विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. It means to repay the debt fully during year 2, the government must run a primary surplus equal to 1 plus R. It can do it in one of two ways, या तो decrease in spending या increase in taxes. We assume it to be through taxes so that spending is unaffected. अब आप कहोगे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि देखो विदेशों की किताब है USA प्राइमरली, तो वहाँ पर ना ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का एक मेजर चंक वहाँ जाता है. गवर्नमेंट मतलब मेडिकल पर, स्कूलिंग पर, एजुकेशन पर, वहाँ पे सोशल वेलफेयर पे बहुत खर्चा जाता है. तो इसलिए वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को नहीं कम करना चाहते. तो दैट्स वाई टैक्स बढ़ा के दे वांट टू मेक इट हैपन. It thus follows that the decrease in taxes by 1 during year must be offset by an increase in taxes by 1 plus R during year 2. तो अगर एज अ जनता आप खुश हो जाते हो कि गवर्नमेंट आपके टैक्स कम कर रही है, डोंट बी हैप्पी, वो आपसे ही वसूलेंगे बाद में बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड इतने टैक्स बढ़ाएंगे कि उसमें उनका जो उन्होंने लोन लिया उसका इंटरेस्ट भी कवर हो जाए. अभी हमने देखा फुल रीपेमेंट हुई इन ईयर 2 में, तो अब ज़रूरी थोड़ा ना ईयर 2 में ही हो, किसी भी ईयर में हो सकता है. तो फुल रीपेमेंट इन ईयर T. नाउ सपोज द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू वेट अंटिल ईयर T टू रीपे द डेट. सो फ्रॉम ईयर 2 टू ईयर T minus 1 द प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू 0, दैट इज टैक्सेस आर इक्वल टू स्पेंडिंग नॉट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव B2 इज इक्वल टू 1 प्लस R B1 प्लस 0 विच इज़ 1 प्लस R विद द प्राइमरी डेफिसिट स्टिल इक्वल टू 0 ड्यूरिंग ईयर 3. डेट एट द एंड ऑफ ईयर 3 इज दिस. माइंडेड हम अज्यूम कर रहे हैं दिस थिंग दैट प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू 0. तो सारा खेल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चलेगा. Solving for debt at the end of year 4 and so on, it is clear that as long as government keeps a primary deficit equal to 0, debt grows at a rate equal to the interest rate, and thus debt at the end of the year T minus 1 is this. Despite the fact that taxes are cut in year 1, only debt keeps increasing over time, because while the primary deficit is still 0, debt is positive and so are the interest payment. Each year the government must issue more debt to pay the interest on existing debt. In year T, in which government decides to repay the debt, the budget constant is this, जो भी पीछे किया. If debt is fully repaid during year T, then BT is 0. So from equation 4, इसको solve करके this is what we get. So हमें primary surplus चाहिए equal to 1 plus R T minus 1. जबकि ईयर 2 में अगर आप कर देते फुली रीपे तो आपको प्राइमरी सरप्लस चाहिए था इक्वल टू 1 प्लस आर. चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है डेट स्टेबलाइजेशन इन ईयर टी. तो डेट स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि हम इंटरेस्ट देते रहें जो भी हमने पुराने डेट लिए हैं और जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहे. So we have assumed so far that government fully repays the debt. Let's now look at what happens to taxes if the government only stabilizes the debt. Suppose the government decides to stabilize the debt from year 2 on. Stabilizing the debt from year 2 on means the debt at the end of the year 2 and thereafter remains at the same level as at the end of year 1. From equation 3, the budget constant for the year 2 is this, जो पीछे भी था. Under our assumption that debt is stabilized in year 2, so B2 and B1 should be 1. Substituting that we get this. तो अब आपको जो बजट सरप्लस रखना पड़ेगा या प्राइमरी सरप्लस रखना पड़ेगा, दैट शुड ओनली बी इक्वल टू आर, जबकि पहले था 1 प्लस आर. To avoid a further increase in debt during year 1, the government must run a primary surplus equal to real interest payment on the existing debt. It must do so in each of the following years as well. Evolution of the debt to GDP ratio. So far we have seen the level of debt, but in the economy in which output grows over time, it makes more sense to focus instead on the ratio of debt to output. Arithmetic of the debt ratio. First, divide both sides of equation 3 by real output y to get this. Next, rewrite bt minus 1 upon yt as bt upon yt minus 1 and into yt minus 1 upon yt. In other words, multiply the numerator and denominator by yt minus 1. So you get this. Note that all the terms in the equation are now in terms of ratios to output y. To simplify this equation, assume that output growth is constant and denote the growth rate of output by g. So yt minus 1 upon yt can be now written as 1 upon 1 plus g, and उसको जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे we get 1 plus r minus g. पूरा लॉजिक यहाँ पर ये है कि आपका आउटपुट भी तो ग्रो करता है ना, आउटपुट तो कांस्टेंट नहीं रहता, तो आपको रेशियोज लेनी चाहिए रादर देन टेकिंग ओनली द अमाउंट ऑफ डेट. रेशियो ऑफ डेट टू जीडीपी. तो यूजिंग दिस टू assumption, रीराइट द प्रीसीडिंग इक्वेशन एज दिस एंड वी गेट दिस एज इक्वेशन 5. ये क्या बता रही है, इसका इंटरप्रिटेशन अब मैं आपको बताता हूँ. The change in the debt over time is equal to the sum of two terms, that is equal to this plus this.
The first term is the difference between real interest rate and the growth rate times the initial debt ratio. The second term is the ratio of primary deficit to GDP. By comparing equations 2 and 5, we see that the difference is the presence of G minus R in equation 5 compared to R in 2. जब equation 2 की बात हो रही थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. So suppose the primary deficit is 0, debt will then increase equal to R, but if GDP is also growing, then ratio of debt to GDP will grow slow equal to R minus G, क्योंकि आपका आउटपुट भी तो बढ़ जाएगा ना. अब आते हैं बेटा 4 इश्यूज इन फिजिकल पॉलिसी. पहला रिकार्डियन इक्विवेलेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. How does taking into account the government budget constraint affect the way we should think of the effects of deficits on output? One extreme view is that once the government budget constraint is taken into account, neither deficit nor debt have an effect on economic activity. Ricardian equivalence. His argument was further developed by Robert Barrow. That's why it is also known as Ricardo-Barrow proposition. The best way to understand this logic is through example. Suppose that the government decreases taxes by 1 and it also announces that to repay the debt it will increase taxes by 1 plus R next year. What will be the effect of this on consumption? आपको बता दिया गवर्नमेंट ने कि हम टैक्स कम कर रहे हैं, लेकिन आगे साल में टैक्स वापस लेंगे along with interest. One possible answer is no, because consumer realize that tax cut is not a much of gift. Lower taxes this year are exactly offset in present value by higher taxes next year. Another way is to look at saving rather than looking at consumption. To say that consumer do not change consumption in response to the tax cut is the same as saying that private saving increases over a period of time. क्योंकि टैक्स कटेगा, आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी. अगर आप कंजम्पशन चेंज नहीं कर रहे, दैट मीन्स वो जो एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं, यू आर सेविंग दोज. So the Ricardian equivalence proposition says that if a government finances a given path of spending through deficit, private saving will increase 1 for 1 with decrease in public saving, leaving total saving unchanged. अब क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है, पब्लिक सेविंग कम हो जाएगी, प्राइवेट सेविंग बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल टोटल सेविंग्स विल बी सेम. हाउ सीरियसली यू शुड टेक दिस रिकार्डियन व्यू? Consumption depends not only on current income but also on future income. If it was widely believed that a tax cut this year is going to be followed by offsetting increase in taxes next year, the effect on consumption would probably be small. Many consumers would save most or all of the tax cut in anticipation of higher tax next year. Tax cut rarely come, however, with the announcement of corresponding tax increase a year later. Consumer have to guess when and how these taxes will eventually be increased. No matter when taxes will be increased, the government budget constant still implies that the present value of future tax increases must always be equal to the decrease in taxes today. That means वो future में आपसे interest भी लेंगे. But insofar as future tax increases appear more distant and their timing more uncertain, consumers are in fact more likely to ignore them. This may be the case because they expect to die before the taxes go up, or more likely because they just do not think far into the future. In either case, Ricardian equivalence is likely to fail. In the short run, larger deficits are likely to lead to higher demand and to higher output. In the long run, higher government debt lowers capital accumulation and as a result lowers output. अगला है बेटा डेफिसिट्स, आउटपुट स्टेबलाइजेशन एंड साइक्लिकली एडजस्टेड डेफिसिट. Deficits during recession should be offset by surpluses during booms so as not to lead to steady increase in debt. To help assess whether fiscal policy is on track, economists have constructed deficit measures that tell them what the deficits would be. These are known as full employment deficit or mid-cycle deficit or structural deficit. Such a measure gives a simple benchmark by which to judge the direction of fiscal policy. If the actual deficit is large but the cyclically adjusted deficit is 0, then current fiscal policy is consistent with no symmetric increase or rather systematic increase in debt over time. Debt will increase as long as output is rather below natural level of output, but as output returns to natural level, the deficit will disappear and debt will stabilize. तो अगर आपका आउटपुट कम है तो टैक्सेस कम आएंगे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा. It does not follow that the goal of fiscal policy should be to maintain a cyclically adjusted deficit equal to 0 all the time. In a recession, government may want to run a deficit large enough that even the cyclically adjusted deficit is positive. This gives warning that the return of the output to its natural level will not be enough to stabilize the debt. The government will have to take specific measure from tax increase to cuts in spending to decrease this deficit. The theory underlying the concept of cyclically adjusted deficit is simple. We use the following example to explain. A reliable rule of thumb is that in USA, 1% decrease in output leads to an increase in deficit by 0.4%. ठीक है, डेटाबेस assumption.
It occurs because most taxes are proportional to output, while most government spending does not depend on output. That is, decrease in output leading to decrease in revenue and not much change in spending naturally leads to larger deficit. गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इसलिए कम नहीं करती क्योंकि मैंने पहले भी बताया बाहर के देशों में स्पेशली यूएसए में ना वो वेलफेयर पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उसको कम करेंगे तो फिर अगले इलेक्शन में हार जाएंगे गवर्नमेंट. We know at natural level of output, unemployment would also be at natural rate. Too low an estimate of the natural rate of unemployment will lead to high an estimate of the natural level of output and therefore too optimistic a measure of cyclically adjusted deficit. तो आपको ये पता लगाना बड़ा जरूरी है rightly कि आपका natural level of output क्या होगा. Wars and deficits. Wars typically bring about large budget deficit. It is right for government to rely so much on deficit to finance war. After all, war economies are usually operating at low unemployment, so the output stabilization reason for running deficit we examined earlier are irrelevant. आइए दो वजह देखते हैं. Deficit finance is a way to pass some of the burden of the war to those alive after the war, and it seems only fair for future generation to share in the sacrifices the war requires. The second is more narrowly economic. Deficit spending helps reduce tax distortion. आइए कैसे? Passing the burden. Wars lead to large increase in government spending. Suppose the government relies on deficit finance. With government spending sharply up, there will be a very large increase in the demand for goods. Given our assumption that output stays the same, the interest rate will have to increase enough so as to maintain equilibrium. Investment which depends on interest rate will drastically, will decrease sharply. अब अगर गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है मेरा बच्चा, तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट खर्चा बहुत करेगी जी. खर्चा जैसे ही करेगी तो GAD का कंपोनेंट होता है, AD बढ़ेगा जी. AD जैसे ही बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा जी. मनी बैलेंस, रियल मनी बैलेंस, मनी सप्लाई जिसे कहते हैं, M/P. P बढ़ेगा तो रियल बैलेंस गिरेगा जी. रियल बैलेंस गिरेगा यानी मनी सप्लाई गिरेगा तो LM लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा जी. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा जी. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट घट जाएगी. Suppose instead that the government finances the spending increase through an increase in taxes, say income tax. Consumption will decline sharply. The larger they expect the war to last, the longer they will expect higher taxes to last, and the more they will decrease consumption. In any case, the increase in government spending will be partly offset by decrease in consumption. Interest rate will increase by less than they would have increased under normal deficit spending. और investment भी कम होगी but उतनी नहीं. The more the government relies on deficit, the smaller the decrease in consumption during the war, and the larger the decrease in investment. Lower investment means lower capital stock after the war, and so lower output after the war. By reducing capital accumulation, deficits become a way of passing some of the burden of the war on future generations. इसके बाद है बेटा टैक्स डिस्टॉर्शन कैसे रिड्यूस करते हैं. डेंजर क्या होते हैं काफ़ी हाई डेट के, और लॉन्ग रन चैलेंजेस क्या होते हैं, लो सेविंग, एजिंग एंड मेडिकल केयर. ये आपको रीडिंग से करना है बिकॉज बिल्कुल ही बेसिक थ्योरी है. इनकेस कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं.